everyone and welcome back to my YouTube channel NK Tutorial. This is Nushat here and I'm teaching maths of NCERT class 8. Okay, so बच्चों we are doing 6.3. हम 6.3 कर रहे हैं. We have done question number 1 and 2. अब तक हम question number 1 and 2 कर चुके हैं. Now let's see question number 3. Just see what the question number 3 is saying here. Here telling find the square root of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. हमें इसमें 100 और 169 के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं बट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू. तो in my introduction class I taught you how to find square root by repeated subtraction. Then we find we find a square root by repeated subtraction by subtracting with odd number. हम odd number से subtract करते हुए चलते हैं. Okay, consecutive odd number से. And when you get the result 0, जब आपके आंसर 0 आते हैं then you count the You stop it. हम स्टॉप कर देते हैं. उसके बाद हम स्टेप्स को काउंट करते हैं. So let's see here. First we have to find the square root of 100 by repeated subtraction. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे odd number से subtract करेंगे. Look here, 100 minus 1, 99, 99 minus 3, 96, 96 minus 5, 91, 91 minus 7, what will be 11 minus 7, that will be 4, and this is here 8, okay, 84, then 84 minus 9, 14 minus 9, what will you get, 14 minus 9 will get 5, then here 7, 25, 25 minus next क्या आएगा हमारा 1, 3, 5, 7, 9. After 9 के बाद क्या आता है 11. Which odd number comes after 9? 9 के बाद कौन सा odd number आता है 11. तो 5 minus 1 4, 7 minus 1 6. Then अब हम 64 को subtract करेंगे. Which odd number? कौन सा odd number से? Then that is 13. Getting ना? 4 minus 3 1, 6 minus 1 5. We have got 51. अब 51 को नेक्स्ट ऑड नंबर से हम माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे. 51 माइनस 15. लुक हियर, 11 माइनस 5 6. दिस इज 4. 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 3, 36. ओके, नाउ नेक्स्ट 36 माइनस, अब हम करेंगे 36 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर आफ्टर 15. 15 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 17. Okay, so just look here, 16 minus 7. 16 में से अगर आप 7 को माइनस करोगे, what will you get 9. This is 2 because 1 we have taken, so 2 minus 1 19. Now again, which odd number will come after 17? 19. 19 minus 19 you get 0. Got it now? हमारा रिजल्ट 0 आ गया. Now we will count the number of steps. अब हम स्टेप्स काउंट करेंगे, कितने स्टेप्स पे हमारा आंसर 0 आता है. Look here, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. We have got 10 steps. It means our square root is 10. A square root of 100 is 10. Got it? आ गया? Very clearly? No any dot? No problem? Perfect. अब हम करेंगे square root of 169. I'm rubbing it, okay? अब हम इसे रब कर देते हैं. नो स्क्वायर रूट ऑफ 169. अब हम 169 के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. 169 माइनस 1, फर्स्ट ऑर्डर नंबर से स्टार्ट करेंगे. 9 माइनस 1 8, देन 168. 168 माइनस 3, 8 माइनस 3 5, देन व्हाट इज योर 6. 165. 165 minus 5, then you will get 160. 160 minus next odd number is 7, then 10 minus 7 3, this is 5. 153. 153 minus next is 9, then 13 minus 9 what will be 4, and this is 4. Here 144. 144 minus 11, next odd number is 11. So just look here, 4 minus 1 3, 4 minus 1 3,
and next is 133. 4 minus 1 3, 4 minus 3 133. Next 133 minus, next odd number is 30. 3 minus 3 0, 3 minus 1 2, next 120. Got it? After that, after 120 there is which odd number? 15. 10 minus 5 5, this is 1, 1 minus 1 0, and here 105. Next is 105 minus, what will be next odd number? 70. 15 minus 7, here 15 minus 7, what will be here? 15 minus 7 is 8. This is 9, 9 minus 1 8. Okay, 88. Got it now? कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं. Now next is 88 minus 19. Look here. 18 minus 9 9. This is 7. 7 minus 1 6. Now 69 minus, next step is 21. Next odd number will be 21. So look here. 9 minus 1, what will be? 8. This is 6. 6 minus 2, what will be? 4. Now next 48 minus 23. 8 minus 3 5. 4 minus 2 25. Next odd number is 25 minus 25. After 23, which odd number comes? 25. So 25 minus 25 we get 0. हमारा आंसर 0 आता है. We get finally 0. Now we will count number of steps. अब हम steps count करेंगे. कितने steps आते हैं? Look here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Okay, so we get here 13 steps. Therefore square root of 169 is 13. I hope you will be getting very clearly. So this was finally the answer of 100 and square root of 100 and 169. Till now, bye bye.